Hello again, everyone. Let's continue our chapter People as Resource. In the previous lecture और previously मैंने आपको क्या define किया था कि what is the meaning of population, what do we understand by human resource, and what is the meaning of human capital formation. So now hope you all have understood it better. So now our next topic is economic sector. As you have seen it in the previous classes also, in the 8th class or 7th class, you know how many sectors are there in the economic. But here again we will go through these points. See how many sectors are in economic sector. How many economic sectors are here? See, first primary sector, secondary sector, tertiary sector. So you can see here I have written, we can also call primary sector agriculture sector. All those things which are related to agriculture, like animal husbandry, fishing, poultry, mining. We all these all things are called the work of all these things are called primary sector. Okay, and secondary sector, it is also called manufacturing sector. Manufacturing, that means what is manufactured here, like in industry, in companies, whatever is manufactured, so that will come into the secondary sector. Okay, and tertiary sector is a bit different. There is nothing produced, a tangible thing. So tertiary, or we can also call it service sector. Service sector, that means banking, finance, software, these all things are called service sector. Likewise, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि एक ऑटो वाला जैसे हमको रेलवे स्टेशन से लाके हमारे घर तक छोड़ता है, तो उसने हमको कुछ भी दिया नहीं और इस जगह कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ. देयर इज नो सच प्रोडक्शन दैट वी कैन टच, and nothing is tangible, so we will call it service sector. That means auto wala only provided his services to us. उसने हमको क्या किया, हमको रेलवे स्टेशन से ले जाके और घर तक छोड़ दिया. तो those things are called service, and those things come into the service sector. Likewise banking में हम डिपॉजिट करते हैं, लोन लेते हैं. So those, there is no such production as we see in secondary sector. These sectors are different. There nothing is tangible. So bank provides its services to us. So that means those all things come into the tertiary sector. So these are the basic sector, economic sector. Now see the dependency of these sector, how these are interdependent to each other. See how the primary sector is dependent on secondary, and secondary is dependent on tertiary is also dependent, interconnected to manufacturing, and secondary is also interconnected to agriculture or primary sector. How we can say the primary sector, likewise agriculture, we call it agriculture sector also, and it is, in some ways we can say that the production or whatever manure, machines, anything which are useful for agriculture, that will obviously increase the production. That means those production helps to improve or enhance the production in agriculture sector. So that means they both are interdependent. That means whatever produce here, like machinery, so machinery helps the agriculture. See up now how manufacturing industry gets its raw material. So how agriculture, from agriculture, animal, poultry, mining, fishing, these all things helps to give the raw material to manufacturing industries. Likewise एक पोटैटो चिप्स हम खरीदते हैं, और वो पोटैटो चिप्स के लिए हमको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है एग्रीकल्चर से. वो पोटैटो हमको कहाँ से मिलेंगे, तो वो हमको कहाँ से मिलेंगे, एग्रीकल्चर से ऑब्वियसली. तो वो इस सेक्टर में आके यहाँ आके मैन्युफैक्चर होके, तो वो क्या हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, that is somehow we can say that is dependent on agriculture to get its raw material. And in the same way tertiary sector, services, when we get the services like software up, if software will be improved, so that means this will also help in secondary sector. Secondary में
कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को सॉफ्टवेयर की, सर्विसेज की जरूरत होती है. तो दैट मीन्स कि टर्शरी सेक्टर ऑल्सो हेल्प्स द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में भी आजकल बहुत सारे बीपीओज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो लाइकवाइज हियर ऑल्सो इनके भी सर्विस सेंटर, कॉल सेंटर्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए भी. तो दैट मीन्स कि टर्शरी सर्विस सेक्टर्स क्या हैं, ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर को दे ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर. अभी से कुछ 50 साल पहले तक हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. बट नाउअडेज अभी जो सिनेरियो है वो थोड़ा दैट हैज बीन चेंज हो गया है. और अभी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किस सेक्टर में काम होता है, टर्शरी सेक्टर में. टर्शरी में ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं. अभी बहुत डीप में तो नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन जितना दिया हुआ है दैट इज सफिशिएंट. इन द नेक्स्ट क्लास यू विल आल्सो कम टू नो दैट हाउ मेनी पीपल आर एंगेज्ड इन दीज पर्टिकुलरली सेक्टर. हम अलग अलग सेक्टर्स में कितने लोग एंगेज हैं और कैसे हैं ये हम देखेंगे. बट फॉर नाउ दीज थिंग्स आर सफिशिएंट. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, देयर इज economic activities. See, we have seen economic sector. Now the second thing is economic activity. What is economic activity? By doing these activities only we get to know what are the sector. First you have to understand what are the economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, दैट मीन्स ये एक्टिविटी कौन किस एक्टिविटी में एंगेज है. सपोज देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटी. फर्स्ट मार्केट एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटीज, एंड सेकेंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटी. सी अब what is the meaning of market activities? Market activities, that means the work whatever is the work person जो भी करते हैं लोग, वो क्या होता है, वो उससे कुछ पे मिलता है, कुछ सैलरी मिलती है. एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, दैट मीन्स कि when we do something but only for ourselves, हम सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं, we are not doing anything to get paid. हमको कुछ उसके लिए सैलरी नहीं मिल रही, हमारा सिर्फ लिवलीहुड चलाने के लिए, हमारी लाइफ चलाने के लिए वी आर डूइंग समथिंग. सो दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटी. दैट मीन्स हम वी आर नॉट कनेक्टेड टू द मार्केट, वी आर नॉट सेलिंग, बाइंग एनीथिंग, वी आर नॉट डूइंग सच थिंग्स. But in the market activities we are doing something, such things like we are selling something, buying something, whatever is, and we are providing our services so that we can get paid. So these are called market activities. And market activities, these help to improve the income of a person. और ये income, non market activities, ये पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन की इनकम को बढ़ाने में हेल्प नहीं करता है. बट मार्केट एक्टिविटीज जब हम हमारे पर्सनल काम के अलावा हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे होते हैं या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज. और यही मार्केट एक्टिविटीज में हम इन चीजों में अलग अलग जगह पे एंगेज होते हैं. अब ये मार्केट एक्टिविटीज में आप प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हो सकते हैं, सेकेंडरी में भी हो सकते हैं, और टर्शरी सेक्टर में भी एंगेज हो सकते हैं. नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आप कुछ भी कर रहे हैं, सपोज इफ यू आर डूइंग एग्रीकल्चर, फार्मिंग आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अर्निंग सिर्फ वो है कि आप अपना लिवलीहुड ही चला सकते हैं, यू आर नॉट गेटिंग, आपके पास कोई सरप्लस नहीं है. सरप्लस दैट मीन्स कि आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ खुद का ही गुजारा कर पा रहे हैं, आप अपनी लिवलीहुड ही चला पा रहे हैं. दैट मीन्स यू हैव नथिंग टू सेल, यू डोंट हैव समथिंग टू सेल. आपके पास इतना है ही नहीं कि आप उसको क्या कर सकें, बेच सकें या उससे कुछ अर्न कर सकें. ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. So now hope you all have understood it. Economics, what do we understand by economic sector? What is the meaning of economic sector? How many sectors are there? And economic activities. See, and since हमने शुरुआत से इस चैप्टर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द पॉपुलेशन. द
name of the chapter is people as resource. So we have talked a lot about population. Population skilled होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, trained होनी चाहिए, they should be trained, so they will become human capital. And there is a process of making human capital that is called human capital formation. The process is called a human capital formation. What a kind of process is that? So process is that making human skilled, trained, and educated, so we call it human capital. अच्छे हैं वो, पढ़े लिखे हैं, so we call it human capital. So we have talked a lot about population की population अगर पढ़ी लिखी है तो वो कभी भी बोझ नहीं है, और population अगर कम पढ़ी लिखी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो क्या है, लाइबिलिटी है. सो ऐसे ही अब वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो व्हाट शुड बी द क्वालिटी इन द पॉपुलेशन? किसी भी पॉपुलेशन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, and see, only you have to see what are the points. Quality of population. See, quality of population. First quality is education, educated. Population should be educated. Second thing, healthy. Population should be healthy. And the third point is population should be trained or skilled. Trained or skilled. So that means these are the quality. If we focus on these particular things, education, health, and training or skill, so that means quality of population will be improved. And if the quality of population will be improved, only then the economic condition of country will be improved. Okay, got it? Why? पॉपुलेशन हमने पहले ही बात की कि पॉपुलेशन जितनी अच्छी होगी और जितनी पढ़ी लिखी होगी, जितनी हेल्दी होगी, जितनी ट्रेंड होगी, जितनी स्किलफुल होगी, तभी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सकती है. जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इन सेक्टर्स में, मार्केट एक्टिविटीज में एंगेज्ड होंगे, इन सेक्टर्स पे काम कर रहे नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, सो दैट मीन्स ये पॉपुलेशन हमारी कैसी है, बहुत अच्छी है. दैट मीन्स if we work on population, so it will always help to boost the economy of any country, economic condition of any country. Okay students.